चिंतित हैं। जी संजय जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया sir. We'll just let you go so that we can reconnect with you later. And Vishnu, let's also take this moment to put out the first response from the Prime Minister that is up on your screens. He says, and allow me to quote, "The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour," he says, "my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with ministers and authorities who are working to assist those affected," unquote. And we must also reiterate a lot of this important information. The aviation minister is already en route to the site right now. So is the HM, Amit Shah, Vishnu. And all these pictures, multiple of them on your screens, are capturing the enormity of this story, the crash that we are talking about. What led to this is still a matter of investigation, but we want to know more about the safety of those who were on board, the survivors. We do know that there has been medical help that was rushed immediately. Fire tenders, teams of the NDRF, the rescue teams are all on spot as we speak. Images are dramatic, images are disturbing, but this again is a story that tells us, Vishnu, that life is not just fragile, but sometimes you do not know what possibly can just hit you. I mean, in today's day and time, when we were talking of this aircraft, said to be pretty stable, not very old, we do not know still what happened in those 11 final years moments. and 5 months old. It's which as aircraft go is it's not very old. The pilots had middling levels of experience. But I mean, the fact that we have this video will actually help investigators to a great extent. Captain Khalid, I suppose the first task of investigators would be locating the black box, which would have the cockpit voice recorder and the digital flight data recorder. How important would that be as a first step? And what about ACARS data? That's transmissions from the aircraft which also reveal important data. Would a 7878 be configured with that? Yeah, so both the recording flight data recorder, cockpit voice recorder. Sorry, go ahead, sir. We lost your line. Go ahead. All right, we'll come back in a moment. Who else do we have with us at this stage? Do we have Vipul Saxena as well with us? Captain Thomas, can you hear me? All right, Captain Thomas, same question. We lost the line with Captain Khalid. ACARS data and digital flight data recorders. Could you tell us about both? Is that a question for me, Vishnu? Yes, it is. Go ahead, Captain. Okay. All aircraft of this type are equipped with the cockpit voice recorder and the digital flight data recorder and the ACARS. Now, they give varying information, and these are together what is called a black box. And this data would have to be downloaded first, and only then can you get an accurate information on exactly what transpired. Now, looking at the visuals, the only thing that can be sort of speculated is that both the engines are not developing power, and in my experience, I do not think birds can cause this amount of loss of power unless there were a huge, I mean, to get a 787's 2 engines down, you would require a farm full of birds and big birds. A couple of other factors, Captain, about a potential loss of thrust. Loading of the aircraft could also be a factor. The temperature at the, in Ahmedabad could also be a factor. The setting of the engine could also be a factor. I mean, this is just off the top of my head. Would this be something that investigators would be looking at as well? Absolutely. You've got all these 3 points correct. Now, the 787 has so much of reserve thrust that even if all these things that you mentioned are, overweight, you just need to push those thrust levers a little forward and it'll take care of it, even on a single engine. So, I know that the parallels are going to go back to Ahmedabad. Ahmedabad is a place where the temperatures can really go high, and there has been a 737-200 crash that happened due to overloading. But in the case of a 787, it's too reliable an aircraft, too good, brilliant engines, lovely crew, and very highly trained. It doesn't seem probable that these errors can bring down this airplane. No, but Captain, again, do you see this as being a mechanical issue, or should we look at other factors as well?
I would be castigated within my circles if I came out and said that I believe this is the cause for reason. You are right. It could be a mechanical issue, but then it really needs to have much more information given to me before I can. What we just spoke is preliminary, just to tell absolutely, people Captain. that this could happen. All right, Okay, the I think Minister of that's State Muralidhar for... Mohal, the MOS Civil Aviation. I think he's speaking. Let's cut across and listen in. 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे, तो वहां पे अभी सब राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहां पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी करी है। माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई और हमारे मिनिस्टर राममोहन नायडू जी वहां पे पहुंच रहे हैं। मैं भी यहां से अभी निकल रहा हूं, तो अभी जांच तो शुरू है। वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है, उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, डीजीसीए थे। तो एक्चुअली उसमें रीजन क्या है, कितनी कैजुअलिटीज है, और वहां पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है उस पर चर्चा हुई है। अभी किसी बात पर बोलना, यानी कि कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। पहला मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो वहां पे लोग फंसे हैं, जो लोग अभी वहां पे इंजर्ड है, उनको बाहर निकालना है, उनको इमरजेंसी में मदद करना है। तो इसीलिए हमारी टीम अभी जुड़ी है, हम वहां पे पहुंच रहे हैं। सर 105 कैजुअलिटी बताई जा रही, कहा जा रहा है कि पायलट ने मेडे भी बोला था। तो नहीं, अभी हमने ऑफिशियली कोई उस पर बयान नहीं दिया, क्योंकि वहां पे तो काम शुरू है अभी। और सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी यही है कि जितने लोग वहां से हमें बचा सकते हैं, हमें उनको बचाना है, उनको इमरजेंसी, उनको वहां पे सेवा देना है। तो मुझे लगता है कि उस पर बाद में बात कर सकते। पहले काम तो यह है कि हमें लोगों को वहां से बचाना है, उनको हेल्पलाइन नंबर वहां से एक जी अभी तो नाम फाइनली नहीं, अभी लिस्ट आ रही है, लेकिन बोर्डिंग पास पे तो नाम था, लेकिन देखते हैं अभी क्या होगा। एक वहां पे हमने हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी शुरू किया है। हमारे अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वहां का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताता हूँ, 07922869211। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, जो वहां पे हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है वो है 07922869211। और दिल्ली के जो एयर इंडिया का उनका ऑफिस है, वहां का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 01169329333। और यहाँ पे ये दोनों नंबर अभी हमने पब्लिश भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हमें वहां पे मदद कार्य जो है उस पर ध्यान देना है, तो हम सभी लोग वहां पे पहुंचे। सर जो बचने की उम्मीद है सर, कि 2-3 लोग नहीं, ज्यादा लोग बच सकते हैं, लेकिन अभी उस पर बोलना ठीक नहीं है कि हमारे सामने अभी रियल पिक्चर क्या है वो आने वाला है। पहले तो लोग वहां पे सब हम जुड़े हैं, वहां के राज्य सरकार के संपर्क में, राज्य सरकार के माध्यम से सभी वहां की जो इमरजेंसी उनकी सेवा है वो वहां पे काम कर रही है। तो पहले वहां पे जाके पहले बात करेंगे, देखेंगे, उसके बाद बोलना। अभी वहां पे हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर राममोहन नायडू जी, मैं और मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी डीजी से हम अभी यहाँ से एक साथ हम ही यहाँ से चले, यहाँ से वहां पे पहुंच रहे। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के तो सभी ऑफिशियल्स है, वहाँ के हमारे सीएम साहब है, लेकिन यहाँ से भी हम हमारे सभी मंत्रालय के सभी टीम भी वहाँ पे पहुंच रही है और हमारे मिनिस्टर भी पहुंच रहे हैं। नहीं, अभी तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, थोड़ा समय आप देखिए। नहीं, अभी मैंने वही कहा कि अभी तो एक प्रायोरिटी हमारी कि वहाँ के लोगों को बचाना है। बाद में ये सब जो पिक्चर है, जो असल वहाँ पे सत्यता जो है वो सामने आएगी, तो उसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। कोई कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया था, शुरुआती जानकारी क्या दुर्घटना से पहले कोई कांटेक्ट किया था क्या? वो तो मैसेज शायद दे रहा था कि यहाँ पे इमरजेंसी में थोड़ा मदद की जरूरत है। बाद में उन्होंने शायद कहा कि अभी
हमें हमारे पास जो कुछ है वो तो खत्म हो रहा है। शायद ऐसा कुछ तो मैसेज दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। किस स्तर पे हो रही, किस स्तर पे? नहीं, अभी तो कौन सी टीम जांच करी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। हमारी सभी मिनिस्ट्री, उस पर मैंने कहा कि अभी मीटिंग भी हुई है, लगातार पिछले 2-2.5 घंटे से हमारी टीम उस पर काम कर रही है। हमारी सेक्रेटरी है, डीजीसीए है, एआई की टीम है, सभी लोग, हमारी विकास की टीम, सभी लोग एक साथ बैठकर वहां पे काम कर रहे हैं। और अभी हम डीजीसीए, हमारे सेक्रेटरी और मैं तो हम तो वहां पे अभी फिजिकली भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नायडू जी से, हमारी सभी लोगों से बात भी की है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर वहां पे पहुंच रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी स्तर पे ये अभी राहत का कार्य बड़ी इमरजेंसी के तौर पर शुरू ऑडिट होगा क्या? सभी प्लेन का इंडिया के ऑडिट होगा? नहीं, अभी तो आज मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि हमें इससे पहले बाहर निकलना है। बाद में सब होगा, उसकी जांच होगी, उस पर रिपोर्ट आएंगे, उस पर असल में क्या रीजन है वो भी सामने आएगा। ये आज मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम अभी कंपनीज जो है, सारी एयरलाइन कंपनीज, क्या वो बहुत सस्ता ले रही है क्या लोगों के जान को लेकर? क्योंकि कोई भी मतलब बारिश हो जाए तो प्लेन में कुछ होगा। मुझे लगता है कि कोई जो रियल उसका रीजन है वो सामने आने तक थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना चाहिए। सर, जहाँ पे प्लेन गिरा वहाँ पे कुछ कैजुअलिटी हुई है? लगता है, ऐसा लगता तो है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑफिशियली थोड़ा सा बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे थे, ऐसे भी। सर, डॉक्टर हॉस्टल बताया जा रहा है कि वहाँ पे किसी भी जान नहीं बची है। कितनी गई है यहाँ से? नहीं, यहाँ से एनडीआरएफ की टीम भी गई है, वहाँ पे बाकी सेना दल की टीम भी गई है। मुझे लगता है कि सभी जो टीमें हैं सभी लेवल पे वहाँ पे काम शुरू है। चलो, थैंक आज दुपारी अहमदाबाद विमानतळावरनं. All right, Captain Thomas, I'd just like to, yeah, great. We've paused. Pause on the previous. Can we pause on the previous image, please? Right, Captain Thomas. If we just move forward a little bit, just a second or two before the crash, and this image, we'll clear it up. Yeah, stop right there. Captain Thomas, does this play the video? Captain Thomas, does this indicate that the flaps were in the right setting here? Right here, right? Does this not indicate that the flaps were in an up position? On the takeoff run of an aircraft, wouldn't the flaps be on another position? The flaps would be in takeoff position, and which is very close to what is. You cannot find out from this angle if the flaps were, down or up, but they would certainly be in takeoff position. If they were not, the takeoff configuration warning would come up, and they would have to abort the takeoff. So there's no question of the flaps not being in the correct position. And from this image itself, you can't tell whether the flaps were in takeoff configuration or not. Very difficult, Vishnu. Very frankly, very difficult. And if it were not to be in that position, a warning would have gone off. So it's unlikely that it would happen. Okay, so that's something that we're going to have to look at very, very closely. Captain, any other thoughts on, I understand it's early and I understand we don't want to get ahead of ourselves, but anything else that you can share with us at this stage on your initial thoughts on what's happened over here? Vishnu, not much. My information is as good as yours. Right. So whatever we are getting on our groups, we will collate those information and probably be in a better position to give you something probably down the line. So my apologies for that. No, I completely understand. Thank you, Captain Thomas, very much for being with us. Do join us later on in the evening let's as well. add to that question that you were asking about if there, are any injuries that we are reporting from that medical college We've got some more where they information struck now. up. Apparently 20 students are injured is the initial information coming in, but there were possibly a lot more people there. There were also interns, and again, this is an information that we will wait till it is confirmed. And I want to quickly, recap for our viewers the official responses you've heard so far. I think the MOS Civil Aviation, Muralidhar Mohal, has put out quite a lot of that information. He does say right now that this is still an active situation. Our idea is to ensure that relief and rescue operations are expedited, and that's exactly what is happening, and that is what the focus of the authorities, the administration is right now. But we are looking now at not just the crash site, which is that
medical college, a part of that which you see now on your screens. So there are survivors we are talking about their safety on the plane, and now students and interns possibly also at that medical college. So these are two important images. These are two important locations, pictures of which already are playing out on our screens. Yep. Also, there are control rooms that have been set up, numbers of which continuously are flashing on your screens. That has been set up so that there is, no fake news. You do not look into wrong places for information. Only look at these